Hello students, welcome to my YouTube channel Elixir Smart Classes for Spoken English. How are you all? I hope you are all staying safe. In my last video I had explained you about the introduction of the tenses, and in that video I had explained you about the regular, irregular verbs, three forms of the verbs, and also first person, second person and third person. And if you have not watched that video, I shall be giving the link in the description box, and you can click that link and you can watch the video. Now in this video I shall start with the present indefinite. So all of you are ready for the tenses. Let us start. So let us start with the tenses today. And as I had explained you earlier that we have three parts of the tenses, which are those present tense, past tense and future tense. Okay, so present tense means वर्तमान काल, past tense means भूतकाल एंड फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्यत काल. ठीक है, भविष्यत काल. प्रेजेंट टेंस टाइम जो है प्रेजेंट मोमेंट पे, जो द एक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट मोमेंट. इन द प्रेजेंट टेंस दैट वी एक्सप्लेन यू अबाउट द एक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट मोमेंट पे जो एक्शन होता है उसको वो हम लोग दैट इज कंसिडर्ड इन द प्रेजेंट टेंस. और पास्ट टेंस दैट द टाइम विच हैज़ बीन पास्ड अवे. टेंसेस का मतलब क्या होता है? टाइम, समय, काल, जिसको बोलते हैं टाइम इज प्रीशियस फॉर अस, दैट वी शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम. द टाइम विच हैज़ बीन पास्ड विच विल नॉट बी रिकवर्ड एनी फॉर एनी रीज़न. किसी भी तरह से वापस नहीं आता वो समय जो बीत चुका होता है. पास्ट टेंस विच हैज़ बीन ब्यूरिड इन द पास्ट. ठीक है, पास्ट टेंस दैट इज भूतकाल, जो कि एक्शंस जो विच टेक प्लेस विच टुक प्लेस एंड विच हैज़ बीन पास्ड अवे, दैट इज पास्ट टेंस. ओके, अब नेक्स्ट इज द फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस मीन्स द टाइम विच इज़ अनप्रिडिक्टेबल है. तो द नेक्स्ट मोमेंट पे क्या होने जा रहा है विच इज़ अनप्रिडिक्टेबल, एब्सोल्युटली अनप्रिडिक्टेबल है, दैट वी कैन नॉट से कि नेक्स्ट मोमेंट पे क्या होने वाला है. ठीक है, दैट इज फ्यूचर टेंस. सो वी शैल टेक in present tense. We shall start with the present indefinite. First part of the tense, that is present indefinite. Okay, now in present indefinite tense, let us see the rule which is applying over here in this tense. Rule number 1 that we see is the use of first form of the verb. Use of first form of the verb. Verb means action verb. एक्शन वर्ब क्या होता है? व्हाट इज एन एक्शन वर्ब? एक्शन वर्ब होता है जिसमें कोई एक्शन, कोई क्रिया होती है. इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम? क्रिया. क्रिया होती है, कोई कर्म, कोई कार्य, कर्मक और सकर्मक क्रिया, एज यू नो. एंड रूल नंबर 1 मीन्स यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. व्हाट इज वर्ब? वर्ब मीन्स एक्शन वर्ब, दैट इज क्रिया. क्रिया दैट वी यू हैव सीन इन हिंदी ग्रामर, व्याकरण में आप पढ़ा होगा, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया. ठीक है ना, एक्शन जिसमें कोई एक्टिविटी होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ वर्ब. ठीक है, तो हमने इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाने, कोई भी वर्ब, कोई भी एक्शन वर्ब आप ले लें. से आई ईट फूड. ठीक है, अब इसमें हमने क्या लगाया है? First form of the verb is used. Eat, as you know, as in my last video I had explained you about the three forms of the verb. Eat is the first form, ate is the second form, and eaten is the third form. Okay, and next we use eating in the present continuous tense. Okay, eat, ate, eaten, eating. Okay, now we have used first form of the verb here. Now second rule, I must make you clear about the rule number 2. I explained to you about the first person, second person, and third person, and it has a rule. It has a rule here in this present indefinite. There is no need to put s or es with the verbs coming with first person, I and we
second person you, and third person they. Okay, say in this sentence I took first person I, and with that I had used the first form of the verb, and I haven't used s with this verb. Okay, so let us see an example again. Say we write you eat food. I haven't used any s or es with this verb. We eat food. They eat food. We can take another example. We can take other verb also. I drink milk. You drink milk. They drink milk. We drink milk. Okay, and you can take so many other verbs, but when you are using all the verbs with the first person I and we, second person you, and third person they, there is no need to put s or es with the verbs. Okay, इनके साथ में आपको s या es नहीं लगाना है. Now in rule number third, I shall be explaining to you this rule. There is a need to put s or es with the verbs coming with third person he, third person he, she and it के साथ में जो भी आपका verb आएगा, any verb that you are using with the third person he, she and it, we have to use s or es. Take an example. He eats an apple. ठीक है. She drinks milk. ठीक है. It goes like this. Go का मैंने yes लगा दिया. It goes like this. ठीक है. A third person है, इसके साथ ss लगा दिया, इसके साथ es लगा दिया. Now this rule applied here in the present indefinite. ठीक है. You can make so many other examples also. Say let us see. He sings a song. She goes to school. वो स्कूल जाती है. ठीक है. It goes like this. ऐसे चलता है. Okay बेटा, so present indefinite से examples, let us see the examples. I eat food. मैं खाना खाता हूँ. This happens, मैं खाना खाता हूँ. This happens in the present indefinite. I eat food. You eat food. तुम खाना खाते हो. हम खाना खाते हैं. वे खाना खाते हैं. मैं पानी पीता हूँ. तुम पानी पीते हो. वे पानी पीते हैं. हम पानी पीते हैं. होते हैं वाले sentences जो होते हैं, all comes in the present indefinite. मैं सेब खाता हूँ. वह सेब खाता है. वह दूध पीती है. ये इस तरह से चलता है. ठीक है. वह गाना गाता है. वह स्कूल जाती है. तो जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, डांस करते हैं. मैं स्कूल जाता हूँ, मैं जागता हूँ. इस तरह के जो जाता है, खाता है, पीता है, सोता है वाले जो sentences होते हैं, all comes in this present indefinite. I think is that clear to you? So let us move on to the next tense, that is present continuous tense. In this present continuous tense, the rule applied over here, that is am and are, and as you know is used with the singular form. ठीक है. And are used with the plural. Okay, and am is used with I only. I के साथ ही use होता है ना. I am going to school. Okay, so next rule applied over here is, this is the first rule.
Okay, and this is the second rule. That is first form of the verb is used. First form of the verb is used. साथ ही में प्लस ing, इसमें ing भी लगेगा. से लेट अस टेक एन एग्जांपल. आई के साथ हम क्या लगा देंगे? आई एम. फॉर्म लगा लें. टेक एनी एक्शन वर्ब. से लेट अस टेक गो. गो के साथ प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing, गोइंग. आई एम गोइंग टू स्कूल. मैं स्कूल जा रहा हूँ. जो ing का मतलब क्या हो रहा हूँ. ठीक है, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ वाले, रही हूँ वाले जो सेंटेंसेस होंगे, ऑल दीज कम्स इन दिस फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, वर्ब्स कौन से अप्लाई होंगे? इज, एम, आर. कई लोग क्या करते हैं बच्चे, वो sometimes when they are writing using ing form they don't apply, they don't use the rules, they don't use these helping verbs, नहीं लगाते हैं, is, am, are नहीं यूज करते हैं. या फिर क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही वो क्या कर लेते हैं, वो ing लगा देते हैं, दे आर यूजिंग इन द प्रेजेंट इंडेफिनेट. लेकिन नहीं बेटा, आप रूल को फॉलो करें. यू learn the rules because these rules are very simple and these are the basic rules. ठीक है, there are so many other peculiarities still there in these tenses, but first you must know and learn these basic rules. Okay, and if you learn these rules now, that would be really very easy for you to learn and understand about the tenses. Okay, I am going to school, मैं school जा रहा हूँ. Let us take other example. This is the plural form. We are playing cricket. हम क्रिकेट खेल रहे हैं. शी सिंगुलर है तो इज आ जाएगा. शी इज डांसिंग ऑन द फ्लोर. फर्श पे नाच रही है. ठीक है, ing play ing. ओके, सो वेरी सिंपल. यू कैन मेक न्यूमरस सेंटेंसेस ऑफ सच काइंड. ठीक है, फिर आप मुझे बताएं कि आपको समझ आया है. इफ एनी क्वेरीज आर देयर, इफ यू हैव टू पुट एनी क्वेश्चन, यू कैन put it in the comment box and you can revise the sentences. Let us take more examples. Say they are watching. Watch is the first form, then ing. Watching television. Okay, ठीक है. I am running very fast. मैं बहुत तेज दौड़ रहा हूँ. Running ing लगा देंगे. Running very fast. You are walking in the park. तुम पार्क में सैर कर रहे हो. ठीक है, तो दिस वे यू कैन मेक न्यूमरस सेंटेंसेस बट अप्लाई दीज रूल्स. ओके, यूज दीज बेसिक रूल्स. ठीक है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड प्लस ing लगा दें, आपका सेंटेंस बनेगा. हिंदी में क्या है, इसके सेंटेंसेस क्या बन जाएंगे? मैं स्कूल जा रहा हूँ. हम क्रिकेट खेल रहे हैं. वह डांस कर रही है, फर्श पे डांस कर रही है. दे आर वॉचिंग टेलीविजन. वे टीवी वॉच कर रहे हैं. आई एम रनिंग वेरी फास्ट. मैं दौड़ रहा हूँ, बड़ी तेज़ी से दौड़ रहा हूँ. यू आर वॉकिंग इन द पार्क. तुम पार्क में वॉक कर रहे हैं. ठीक है, हिंदी में रहा है वाले जो सेंटेंसेस होंगे वो ing में आ जाएंगे. ठीक है, इज दैट क्लियर टू यू? ओके बेटे, so in my next video I shall be I shall stop over here, and in my next video I shall start with the present perfect tense, because sometimes that rules overlap and students don't understand it, and I want that you must understand these rules and apply these rules properly, and learn the rules and go through all these rules. Okay, practice these rules at home also, and I shall be explaining you about the present perfect tense and the present perfect continuous tense in my next video. Okay, so if any queries are there, you can ask me. Okay, thank you so much. If you have liked my video, you please like, share, subscribe, and click the bell icon so that you get the notification if any video is coming, and you can get that video. Okay, thank you so much for joining me.